Hello students, very warm good morning to everyone. Yesterday we talked about the basic features of India's federalism and how India's federalism evolved, right, since its inception in 1935 India Act. Today we will move ahead in our class, and we will see that what are the basic features of the basic critical evaluation of India's federalism, right? So if you see the author like Casey Ware, he was a Canadian scholar, and he categorized India as a quasi-federal state. Quasi-federal means half federal, half unitary, right? So that is, India is a unitary state with few federal features. But if you see it seems true, but if you see the another scholar like Aaron Lespard says that no, India is not a quasi-federal kind. It was a constitutional democracy. It was a constitutional. It means there was a consensus. There was a consensus between center and the state. So power was shared. It was a power sharing. Right. So there is a power sharing between center and the state. And the second point was the autonomy. So there was a regional autonomy, right? So there is a state autonomy. There are various states like Jammu and Kashmir in those days, 1950s, 60s. Hi Ladita, good morning. Morning, sir. How are you? Hello. Sir? Good morning. I thought I'm good. I'm good. How are you? I'm also good, sir. मेरी आवाज आ रही है ना? So, how are you? Very good. Very good. हाँ, आ रही है. कट क्यों रही है अभी से आपकी आवाज आज? नहीं आ रही सर. हाँ, आ रही है. So, कल हमने क्या पढ़ा था कि बेसिक कैसे फीचर क्या है फेडरल. कल हमने क्या पढ़ा बेसिकली, आप बताएं, फिर मैं आगे बताऊं. ये सर, कल हम पढ़ रहे थे कि फेडरलिज्म क्या होता है और उसका जो ऑपोजिट होता है यूनिटरी व्हाट इज दैट. फिर हमने कुछ यूएस इंडियन मॉडल देखे थे. देन वी टॉक्ड अबाउट फीचर्स की डुअल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट, और सेपरेशन ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन को देखे थे. सॉरी, इंडियन फेडरलिज्म को देखा था, राइट. ये सर, फिर हमने देखा था कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो शेप करते हैं द डिजाइन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म को. ओके, राइट. सो एक्चुअली इवोल्यूशन हमने देखा था बेसिकली कि 1935 इंडिया एक्ट, देन इट वाज अ पार्टीशन, देन डेवलपमेंट प्लान, एंड देन पार्टी सिस्टम, राइट. ये सब चारों जो फैक्टर है कैसे इंडियाज फेडरलिज्म को एक शेप किया, राइट. एंड in this context India's federalism evolved, right. Yes, sir. So if you see the critical evaluation, जो अलग अलग एक्चुअली ऑथर हैं उनकी अलग अलग बातें हैं, राइट. और जो एक सबसे बड़ी बात होती है वो केसी वेयर है. केसी वेयर एक्चुअली I am just confusing whether he is American or Canadian, but he was a scholar either from USA or Canada, right. We have to confirm. I think he was from USA, and he said that India is a quasi-federal state, right. So what is quasi-federal state? Means India is a unitary state with few federal features, right.
Yes, sir. And exactly, we have seen that many features that is like a strong center, single constitution, flexible amendment procedure, equality of representation, emergency provisions, integrated judiciary, veto over the state bills, right? And governor's role, governors, हमने देखा ना गवर्नर्स का जो 356 का जो है उसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे आज. गवर्नर्स का रोल, ऑल इंडिया सर्विसेज, दिस ऑल फैक्टर्स tells, right? These are the qualifying qualifier that says that India is a kind of unitary state, right? But this is the not only the fact. Actually, this features was kept on the basis of consensus within the Constituent Assembly. No state, actually, no state leader, I'm telling you, no state leader either from Madras, either from Bihar or UP or Punjab, dissented on it. कि ऐसा नहीं चाहिए हमें constitution, right? And there is one scholar, his name is Aaron Lispard. क्या नाम है उनका? Aaron Lispard. ये लिखिए, हाँ, Aaron Lispard. जब आए केसी वियर का तो आप इनका आर्गुमेंट से काउंटर करना है. आपको बताना है कि यस केसी वियर का जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे गवर्नर्स का 356, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर, unequal representation of the state, emergency provision, it all reflect, it tells itself that India has a unitary state with some federal features. But it is not the fact, because in the Constituent Assembly, right, no regional leader either from Madras or Bengal or Bihar or Andhra or Maharashtra or Punjab have dissented on the fact that we need a strong center because the circumstances of partition, right, and the fear of the further partitions, right? So there was a consensus for a unitary biased constitution. There was a consensus, right? Right. Yes. What Aaron Lispard argued that, Aaron Lispard saying that, okay, Indian constitution looks like a central, very centralized state, but the Indian democracy is very much consociational. क्या बोला था? Indian democracy is a consociational. Consociational मतलब? बताता हूँ. Indian democracy is, spelling देख लीजिए, consociational. Consociational means, there are consensus. There are consensus between center and state. So there are power sharing, right? There are sharing. So if you see, center exercises power at the center, but the state exercises power at the state. So state is divided on the basis of linguistic, right? So see, the State Reorganization Commission established 14 state and 6 UTs, right? And there are 28 states and UT कितना है? 8 UTs, right? So state has been divided on the basis of linguistic. That means the cultural autonomy is maintained somehow, right? Are you getting my point? थोड़ा. अच्छा. 1 minute. आपको ये पता चला केसी वेयर क्या कहता है? Yes sir, कि इंडिया जो है वो quasi federal है. Why does he say so? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ज्यादातर जो है वो यूनिटरी फीचर्स है विद फ्यू फेडरल फीचर्स. Right. So, but what should be the against statement against his viewpoint? कि यूनिटरी से ज्यादा हमारे यहाँ पे जो तो ठीक है. देखते हैं.
प्रो तो ठीक है केसी वेयर की हम बात मान लेंगे कि ठीक है हमारे पास इतने जैसे हैं, ये सब सारे जो फीचर्स है वो अपने आप दिखाते हैं, हमें फैक्ट की जरूरत नहीं है। फैक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं जो बताते हैं कि इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट विथ फ्यू फेडरल फीचर, बट इट इज नॉट द फैक्ट। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, एक में यूनानिमिटी थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो सेंटर्ड बायस्ड होना चाहिए, मानी टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। We need a strong state, a strong nation state, right? And there was no dissent from either of the regional leader, right? Are you the point? यस सर, एक बार लिखवा दीजिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, question in favor of him and then also counter him, right? One. क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। पहले है इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट, right? In the context of this statement, in the context of this statement, evaluate Indian federalism. ये आपके क्वेश्चन हो गए, राइट? यस सर। ओके, आंसर लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। ओके, आंसर लिखिए। देखिए, an eminent scholar where termed India's federalism as a quasi-federal. It denotes India is a unitary state with federal features. Right? लिख लिया? Yeah. It is evident to know the features of Indian Constitution like emergency provision,
All India Services, All India Services, Governor's Power, Article 248, 249 ऐसे लिख दीजिएगा, 251, राइट। आपको पता है ना रिशिड्यूल पावर, ऐसे आर्टिकल लिख दीजिएगा, उनको पता चल जाएगा। हाँ, 252, 253, राइट, 256, etc reflects India is a unitary state. But in the context of partition, the Constituent Assembly was in consensus, was unanimously agreed to have strong nation state, strong, यहाँ पर हाइफन नहीं होगा, हाइफन यहाँ पे होगा, strong nation state to check further disintegration and secessionist forces. secessionist का S से शुरू होता है कि C से शुरू होता है? S से ना? secessionist forces, right? इसका spelling आप देख लीजिएगा, एक्चुअली secessionist forces, SECCESSIONST, yeah, secessionist forces, right? It was, it is agreed that India, along with its state, will work together. And that is why the Constitution provides more power to the center. Fine, इतना ये आइडिया क्लियर है? लिख लीजिए. It is agreed that done. Okay. In practice, India is a federal state.
India is a federal state. Analysts part argued that Indian democracy is constitutional. It means there is a consensus there is a consensus to rule. There is a consensus between the center and the state to rule together. Right? State has autonomy to rule in their state, in their respective state, respective territory, and few states have more autonomy, like Article 371, right? Yes, sir. There is a minority veto in India. सारा खत्म हो रहा है. There is a minority veto in India, like Muslim personal law, Muslim personal law, and there is a power sharing. And there is power sharing. Right? The changing nature of party system has strengthened the federal system in India. India's federal system, इतना लिख लीजिए बस, सेकेंड पैरा में. लिख लीजिए, लिख तो मुझे बताइएगा. एक कॉन्स्टिट्यूशनल समझा दीजिए, और एक ये लाइन जो लिखी है कि in the context of partition, the Constituent Assembly was unanimously agreed to have strong nation state to check further disintegration and secessionist forces. अच्छा, कल बात नहीं हुई थी हमारे आपके बीच में कि एक्चुअली क्या था, पहले हम क्या फुल्ली फेडरल स्टेट चाहते थे, राइट? बट क्या हुआ कि पार्टीशन जब हुआ तो एक्चुअली सारे जो एक भ्रम था इनका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि मुस्लिम लीग आएगा, हम एक फेडरल स्टेट बनाएंगे, राइट, रेस्टिट्यूटरी पावर प्रोविंस को मिलेगा, हम बस चार जो सेंटर होगा चार पावर को एक्सरसाइज करेगी, राइट, और हम एक फेडरल स्टेट के रूप में इवॉल्व होंगे. वो जो सारा भ्रम था उनका वो टूट गया. व्हाई? ड्यू टू द पार्टीशंस. एंड दे उनको लगा कि ये तो एक रिलीजन के नाम पे है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कि it will go for further disintegration, right? Are you getting my point?
Hello. Yes, I'm not getting your voice. Hello. Yes, am I audible? Lalita? Am I audible? Hello. Hello. Am I audible? Should I start? Yes, hello. Am I audible? Yes. आप तो Yes, गायब ही sir. हो गए। पता नहीं अचानक trying to reconnect the audio और वो हाँ, बैक हो गया। 3-4 मिनट के लिए आप तो गायब ही हो गई। अब ठीक है? अब ऐसे ही आवाज आ रही है। अच्छा, अभी तो 8 8:30 बजे हैं। आई हैव टू टॉक टू द क्या इनके जो टेक्नीशियन है, क्या प्रॉब्लम है। सो आवाज आ रही है अब? नो सर, कुछ और इशू है आज क्या मेरा। इशू? ये जो आपका नेटवर्क का इशू है क्या? माय नेट प्रॉब्लम। ओहो, maybe. So did you get the idea? एक पैरा वर्ड लिखाऊंगा मैं। लिखवाऊं? Should I start? सर गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, एक्चुअली शायद मेरा नेट खत्म हो गया है। अच्छा। वाईफाई इज नॉट वर्किंग। ओहो। आई एम जस्ट अ सेक, आई एम ट्राइंग। Just try. Just give me 2 minutes. I am shifting to some other place. Just give me 2 minutes. Okay. No issue. Do it.
खत्म हो गया ना। Yes. Sir? Now it's Yes. fine. Yeah. Yes, sir. So, आप जब वॉक कर रही थी उसका भी आवाज आ रहा था. You're, going up to this up. Yes, sir. Yes. Actually, my study room is upstairs. Okay. तो yeah. वहाँ तक वाईफाई do not come. अच्छा. तो वहाँ पे I use my phone का net. That is very good, Airtel. अच्छा. तो वहाँ पे I don't know, all of the sudden वो खत्म हो गया शायद. अच्छा, कोई बात तो नहीं. कनेक्ट कर रहा था, वो मुझे पता नहीं चला, तो इसीलिए now I have shifted to this. Good. Now your voice is more, clear. Yeah. So, did you get the idea? Yes, sir. वो बस. Okay. अभी हम समझाएंगे, थोड़ा एक पैरा और लिखवा देता हूँ, राइट? ओके. हाँ, ये आपने लिख लिया यहाँ तक? फेडरल सिस्टम इन इंडिया. या वहां तक लिख लिया? Yes, sir. So party system has extended the federal system in India. The features of Indian federalism are Indian federalism are two. One is cooperative federalism, and second is asymmetric federalism. Right? Yes, sir. So इस बेसिस पे इंडिया का फेडरलिज्म चलता है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अभी बताएंगे, और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के ऊपर, राइट? इंडियन फेडरल सिस्टम works on the above two features, right? So India looks like a unitary state, but in practice it is a federal state. Fine. Yes, sir. Done? लिख लीजिए. Yeah, thank God your voice is very clear. 4-5 मिनट तो गायब ही हो गया, मुझे लगा क्या हो रहा है. वो से भी कनेक्ट कर रहा था अपने आप ही, because net dropped no that time. So then I got to know that कि वो खत्म हो गया है. कोई बात नहीं. और वॉइस बंद हो जाता है तो पता है सिंगल हैंडेडली आप कब तक बोलेंगे, राइट? सिंगल. Yes. और पता नहीं सामने वालों को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? Anyway, so just note it down. Have you noted down? Yes, sir. Done. Okay, very good. अब मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया? Constitutional democracy. Yes, sir. Constitutional democracy, it is a kind of democracy where power is shared, right? So power is shared at all the level, right? So if you do central government, their power is shared. You can see the representative from all sections of the society,
right? So there are Muslims, there are SC, there are ST, there are women. Yes, sir. Right. So power is shared, and that is also reflected in the central level and the local level. Right. इनका जो आया था बेसिकली जो अरेन लिस्पार्ट का जो ये पेपर आया था वो आया था 1996 में, राइट? और उन्होंने कहा कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है ये पूरी फेडरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, पावर शेयर है, यहाँ पर सेंटर में भी शेयर है, स्टेट में भी शेयर है, स्टेट और सेंटर के बीच में एक कंसेंसस है कि हम दोनों मिलकर रूल करेंगे, राइट? कोऑपरेटिव एक फेडरलिज्म है यहाँ पर, राइट? स्टेट और सेंटर दोनों ही वेलफेयर, पीपुल्स वेलफेयर के लिए काम करेगी, लोगों के भलाई के लिए काम करेगी, एंड देयर आर इंटरडिपेंडेंस। अभी बताऊंगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको कि यहाँ पर, और यहाँ पर एक माइनॉरिटी वीटो है, मतलब कि यहाँ पर जो एक वीटो है, स्टेट को भी वीटो है। आर्टिकल 370 था उस वक्त, अब तो खत्म हो गया है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, राइट? तो यहाँ पर स्टेट को वीटो है। अब देखिए 371 से सारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनके पास एक वीटो है, राइट? यस सर। आर्टिकल 370 जब था तो कश्मीर के पास एक वीटो थी, राइट? फिर आप 5th शेड्यूल देखिए तो 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड एरिया है उनके पास एक वीटो है, जम्मू कश्मीर के पास, राइट? So there are, power is shared and there is a consensus. It is not कि center बिल्कुल मतलब repressively rule कर रहा है, no. The center is ruling because the consensus at the local level कि yes कि उनको allow किया हुआ है, ओके आप रूल कीजिए हम भी रूल करें, दोनों मिलकर रूल करते हैं, फाइन? गॉट द आइडिया? Hello. And there is a minority veto, right? So minority community has veto, like Muslim personal law, right? But now Muslim personal law has been attacked, after the coming of BJP government. So, but if you see the party system, right? The party system has strengthened the federal system in India, right? So the one power, one dominance. Yes, am I audible? I am so sorry, sir, but I don't know why it is behaving like this. No issue, it happens sometimes, right? So ये पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? यस सर। और दूसरा फैक्टर आ जाए, हाँ बताइए, आप बताएं। कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो कंसेंसस लेकर चलते हैं, मतलब उनके पास भी वीटो होती है, राइट? पावर शेयरिंग है, वीटो है माइनॉरिटी के पास। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मुस्लिम को रूल करते हैं, मुस्लिम अपने आप को, अपनी जो कम्युनिटी है उसको रूल करते हैं, राइट? तो माइनॉरिटी के पास एक वीटो है, राइट? एक यहाँ पर कल्चरल ऑटोनॉमी है, राइट? सो इफ यू सी द डिफरेंट autonomous council, Naga Hills, Kasi Hills, Janta Hills, if you see the scheduled area, if you see the 5th, 6th schedule,
the tribal area have their own autonomy, right? Yes, yes. So overall, if you see the Indian democracy, power is shared, power is dispersed. It is not that power is concentrated at the hand of the center. No. What is federalism? Federalism is all about the sharing of the power, right? Yes, yes, sir. कल हम बात करते federalism is shared rule. Do you remember now? Yes, sir. So actually, the Indian federalism is based on the two cardinal points. One is cooperative federalism, and the second is asymmetric federalism. Right? Yes, sir. Okay. So on this above two cardinal features, we can say that yes, India looks like a unitary state, but it is a federal state. So we can counter KCWare. Fine. Yes, sir. Okay. Now, come. What is cooperative federalism? You must have heard of it. इसको मैं मिटा दूं सबको? Yes. Yes, okay. sir. You have noted down? Yes, sir. Okay, you got the idea? Yes, sir. Yes. So you must have strengthened. आपका जो idea है थोड़ा enrich हुआ होगा. Example अगर कोई quasi federal बोलता है, it's not that. Right? अब मैं जब पॉलिटी की पढ़ा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे यस पॉलिटी में जैसे अगर वो आता है सवाल तो हम क्वासी फेडरली करेंगे ना, मतलब या नहीं? तब आप नहीं पॉलिटी में आएगा तब आप कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताएंगे और फिर बता देंगे कि क्वासी फेडरल है, बट आप एक बार लिख देंगे हाउएवर द चेंजिंग पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज हैव, जब आप फिर उसके थोड़ा सा बैलेंस भी कर देंगे, जो चार पार्टी जो सिस्टम है चेंज हो रहा है, पावर शेयरिंग है एट द 3 लेवल्स, बस एक दो लाइन में जब आपको यहाँ पर आएगा तो फिर मान लीजिए PSIR में तो आपको उसको आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देना है, आपको पर्सपेक्टिव उनका भी देना है, आपको पर्सपेक्टिव एनालिस्ट पार्ट का भी देना है, राइट? Okay. And you can write the view of Alexander Wage, that he says, India is a sui generis case. India is a peculiar form of federalism. So you cannot compare. जो हमारे केसी वेयर साहब हैं वो हमारे फेडरलिज्म को अमेरिकन फेडरलिज्म से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि इंडिया का फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरल है, right? Okay. Right. But actually India is a peculiar case of federalism. India का जो फेडरल है it is original federal. We have not opted either a unitary model or not the American model. We have opted original federalism, right? So the Alexander which भी कहते हैं और जो दूसरा ऑथर है उसका नाम है लुइस टिलेन, right? You see, can you see this book? Yes, sir. Yeah, so this is exactly a small book, Indian Federalism, Louis Stellan, written by Louis Stellan. He also talks about the India is a a original form of a federalism. So quasi federal कहना उतना जो ये कह रहे हैं उनका क्रिटिसिज्म ये लोग करते हैं, Louis Stellan करते हैं, एरन लेस्पार्ट करते हैं. Got the idea? Yes, sir. So we have talked about the two features of India's federalism, that is cooperative federalism and another is asymmetric federalism. What is that? Sir, एक सेकंड, उससे वो जो अभी हमने जिनके नाम लिए उनका एक लाइन लिख लें या मतलब अभी बताएंगे, पूरा का पूरा लाइन बताएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, उनका नाम लीजिए उसी में लिख लीजिए, उसी में. The Louis Stellan बाद में बता देंगे. नहीं आप उसी में एक लाइन और लिख लीजिए. As Louis Stellan and यहाँ पे देखिए Alexander, मैं लाइन कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इनका नाम लिखा है Alexander Wich, argued that India neither followed the British nor United States of America.
its federalism is a original federalism. Neither follows Right. American model. Yes, sir. American model or the British model. You know, it is a case of sui generis. लिख लीजिए, it is a case of sui generis. यहाँ पर sui generis मैंने लिखा हुआ है, देखिए. It is a case of sui generis, मतलब, और आगे आपको नहीं लिखना है कुछ भी. It is a case of sui generis. ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. आप टीचर समझता है sui generis का मतलब, आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. It is a case of sui generis. वैसे क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है it is a special case of federal. It is a peculiar form of federal state. It is the original form of federal state. It is a, you know, I'm a Bijendra because I'm a Bijendra. I'm not similar to Lalita. I'm not similar to Aman. I'm not similar to anyone. Right? So India federal is an Indian federal. Right? So it's a case of sui generis. Okay. Right? B.R. Ambedkar also pointed out that, लिखिए, B.R. Ambedkar, इसी में लिख लीजिए, also pointed out that India is unitary in spirit. Indian federalism is unitary in spirit and federal in nature. Yes, sir. Right? So, done. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो जैसे हम पॉलिटी में पढ़ाते हैं तो पॉलिटी वाले को इतना डिटेल नहीं बताते हम, उनको बस बताते हैं क्वासी फेडरल है तो क्यों क्वासी फेडरल है, और जैसे ऐसे सिंपल एग्जांपल जैसे यहीं पर बता देते हैं कि भाई इसलिए क्वासी फेडरल है. हाँ, बस आगे बढ़ जाते हैं, है ना? Yes. हाँ, but you are a specialist of political science ना, so you know little more ना? Yes, sir. Yeah, you should know a little more than the common people. And I'm telling you, you'll get a more benefit in the GS paper. Yes, sir. क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा पेपर है ना, पॉल साइंस IR, जो आपका जीएस का सबसे ज्यादा जो पार्ट है यही पेपर कवर करता है, दूसरा कोई पेपर और कवर नहीं करता. राइट? यू मस्ट नो. हाँ, ज्योग्राफी भी नहीं करता. यू जस्ट कंपेयर, यू जस्ट सी द पेपर एंड देन I know environment paper करता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी करता है पेपर 1 में, पेपर 3 में. राइट? Yes, sir. ये तो पेपर कंप्लीटली पेपर 2 आपका करता है. पेपर 2 कंप्लीटली यही है, PSIR से ही आता है और कहीं से नहीं आता. एंड पेपर 1 हिस्ट्री, नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट, गांधी, जितने नेशनल लीडर है उनके बारे में, ये सारे वहीं से यहाँ से आते हैं. Now come to the two idea that is, a cooperative federalism and asymmetric federalism. What is this? What it is all about? So हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले कुछ आइडिया है, मैं आपको बता देता हूँ किसने क्या कहा है इंडियन फेडरलिज्म के बारे में. जैसे केसी वेयर साहब ने कह दिया कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट. इसमें जब के संथानम कमेटी, राइट,
Santhanam committee said that there are two matters, there are two factors in which the center dominates. Center दो केस में बहुत ही आगे आ जाता है, एक फिनेंशियल मैटर में, राइट, हम फिजिकल फेडरलिज्म पढ़ेंगे, और एक प्लानिंग कमीशन. जो प्लानिंग कमीशन है उसमें भी जो सारा रोल है स्टेट का वो प्लानिंग कमीशन फिक्स करता है, राइट. यस सर. और एक है पॉल एप्पलबे एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, and he was invited by the Indian government. जवाहरलाल नेहरू ने इनवाइट किया था इनको. जब ये इंडिया आए थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज एक्सट्रीमली फेडरल सिस्टम. जब इन्होंने इंडियन सिस्टम को चेक किया, देखा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे. दूसरा है मॉरिस जोन्स टॉक्स अबाउट बार्गेनिंग फेडरलिज्म, right? So bargaining federalism means, there is always bargain from the center, between center and the state. What is bargaining federalism? States and center. वो सेंटर के साथ बार्गेन करते रहते हैं. बार्गेन करता है, right? If you see now, बार्गेनिंग, इतना ऑक्सीजन चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए, राइट. करंट एग्जांपल देखिए, दिल्ली कहता है इतना ऑक्सीजन चाहिए, महाराष्ट्र कहता है इतना ऑक्सीजन चाहिए, केरला कहता है भाई हम सफिशिएंट है, हमारे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमारे पास है, राइट. बट जिनके पास नहीं है, यूपी तो पता नहीं क्या कर रहा है, न्यूज भी नहीं आता है यूपी का. स्टार्टिंग में ही तो आता था बस इसका, पिछले वाले में. राइट. और अब मान लीजिए कि तमिलनाडु है वो अलग नेगोशिएट करता है, जो बंगाल है वो अलग से नेगोशिएट करता है, बिहार अलग से नेगोशिएट करता है. सो वी कैन सी देयर आर negotiation between state and center. Yeah, between the state and center and the states, right? So if you see जो negotiation है किसको किसको लेकर के है, we have to just little bit in detail किसको क्या क्या लेकर के है, मैं बताता हूँ. एक तो negotiation है ऑटोनॉमी को लेकर के, किसको लेकर के, लिख लीजिए, ऑटोनॉमी को लेकर, राइट. सो लाइक राजमन्नार कमीशन, तमिलनाडु मेड राजमन्नार कमीशन, देन देयर वाज अ बंगाल जो क्या था वहां पर, देन पंजाब का जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, बंगाल मेमोरेंडम, यू रिमेंबर यस्टरडे. सो स्टेट डिमांड्स मोर ऑटोनॉमी, राइट. कश्मीर डिमांड्स मोर ऑटोनॉमी, सो स्टेट्स डिमांड. दूसरा है फिनेंशियल मैटर को लेकर के, इसको लेकर के फिनेंशियल मैटर्स को लेकर के नेगोशिएशन है, राइट. सो द स्टेट वांट्स मोर शेयर्स इन द टैक्सेस, राइट. ओके, कैन यू टेल मी अभी टैक्सेस कितना जाता है? जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने क्या रिकमेंड किया है, कितना % टैक्स जाना चाहिए स्टेट को? नहीं पता, ओके. 42%. कितना जाना चाहिए? 42%. But after creation of this Jammu and Kashmir, it was reduced by -1 and it become 41%. And 1% is for the development of for the Kashmir, right? 1% कश्मीर के लिए और 41% जो है वो स्टेट्स के लिए. Fine. Do you remember 80th amendment of the India's constitution? No? 80th amendment नहीं पता? लिख लीजिए, आप डेटा लिख लीजिए, 80th CAA देख लीजिएगा. इसमें क्या कहा था फाइनेंस कमीशन ने, 10th फाइनेंस कमीशन ने, ये 15th फाइनेंस कमीशन, 10th फाइनेंस कमीशन ने
कि स्टेट को 29% शेयर दीजिए, राइट। 15th फिनांस कमीशन, ये 10th फिनांस कमीशन था, 10th फिनांस कमीशन, 10th एफसी। 15th एफसी ने क्या कहा कि आप क्या करिए, 42% दीजिए, बट लेटर ऑन नो इट reduced to 41% and 1% share must go to Jammu and Kashmir. 1% मीन सिर्फ 1% जाएगा उनको? एक्चुअली देखिए, पूरा जो है ना, एक्चुअली 41% जो है ना, 41%, रेस्ट जो 1% बचेगा वो कश्मीर के लिए जाएगा, अदरवाइज 41% स्टेट के लिए जाएगा। नहीं, दैट आई गॉट इट कि 42 पहले था तो उनका एक परसेंट कम कर दिया, 41 कर दिया, बाकी बचा जो परसेंट। 1% बहुत, हाँ बहुत होता है, हाँ। तो वो सिर्फ मतलब बाकी सिर्फ 41% और कश्मीर को that will go extra to the Jammu and Kashmir. It's not कि 41% कश्मीर को नहीं मिलेगा, नहीं, 41 भी मिलेगा प्लस 1% भी मिलेगा। ओके ओके, नाउ आई आपको लगा कि 41% सारे स्टेट को और 1% इनको? हाँ सर, तभी तो मैंने बोला कि 1% एक्स्ट्रा, ओके, राइट, हाँ, 1% एडिशन एक्चुअली, राइट। ओके। सो ऑटोनॉमी एक्चुअली बेसिकली जो फाइट होता है ऑटोनॉमी को लेकर के एंड फाइनेंशियल मैटर को लेकर के, राइट। एंड स्टेट्स आर एबल टू states are able to negotiate, how, because of party system, right? Negotiation is possible due to regional political parties, right? Like Tamil Nadu, तमिलनाडु का केरला, और उसके बाद कौन है, बंगाल, आप नाम लिख सकते हैं, राइट। डू यू नो दैट आफ्टर 1990 के बाद कौन सा स्टेट ऐसा है जो सबसे ज्यादा फायदा लिए है सरकार से? नहीं पता? बताता हूं, आपको नहीं पता होगा, तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में 1990 के बाद जो सरकार रही है वो हमेशा सेंटर के सरकार से जुड़ के रही है, मिल के रही है। तमिलनाडु में कभी भी एक्चुअली रीजनल पार्टी आता है, हमेशा डीएमके या एआईडीएमके, राइट। यस सर। तो अभी जो डीएमके पार्टी आई है आपको कहां पर, तमिलनाडु में, वो केवल पार्ट नहीं है, अदरवाइज एआईडीएमके भी बीजेपी का पार्ट था। उससे पहले ये जो डीएमके की सरकार थी तब यूपीए में इनका पार्ट था, एआईडीएमके बीजेपी का पार्ट। तो हमेशा ये सेंटर के किसी न किसी कोलिजन गवर्नमेंट में हिस्सा रहते हैं और ये अपना हिस्सा बराबर, मतलब सबसे ज्यादा लेते हैं। ये फोर्थ जो पॉइंट, अब जो डीएमके आया है वो तो बीजेपी के साथ मतलब नहीं है, कांग्रेस के साथ। डीएमके का हमेशा अलायंस कांग्रेस के साथ रहता है। तो फिर अब कैसे होगा, मतलब अब नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। अब जैसे ही केजरीवाल को मिलता है ना, वो 900 टन मांगता है ऑक्सीजन, उसको 300 या 400 टन ठहरा दिखा दे देता है, वैसे ही करेगा। It's a shameful, yesterday the Supreme Court, directed the, center, you should give 700 empty oxygen to Delhi, otherwise you face contempt of the court. It's shameful that a center, how you can call Delhi as a government. Delhi is not a state. Yeah. It is a union territory and governed by the lieutenant governor. It means they're governed by the central government. Even the elected popular legislative assembly doesn't have power. Right? So that's unfortunate. Anyway,
तो 3 पॉइंट हो गया आपका, कहीं अगर नेगोशिएशन ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म के ऊपर आया। चौथा पॉइंट आपको देना है एक्चुअली डेवलपमेंट। क्या देना है? डेवलपमेंट। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का जो होता था, प्लानिंग कमीशन सिमेट्रिकली प्लान्ड नहीं करता था। प्लानिंग कमीशन हर स्टेट के लिए अलग अलग प्लानिंग तैयार करता था, प्रिपेयर करता था, राइट। सो फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाइना से लगे हुए, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फंड। हैव यू हर्ड ऑफ स्पेशल स्टेटस? Special status? Yes, sir. So the few states have special status, like Uttarakhand, like Himachal, like Jammu and Kashmir, because their border are, their border are with China, yeah, our neighbor border. So ये चार मुद्दे पर ये नेगोशिएशन होता है, बार्गेनिंग होता है। एंड मॉरिस जोन्स कॉल्ड इंडिया एज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। देयर इज ऑलवेज बार्गेनिंग। इट्स आल्सो करेक्टली ट्रू दैट इंडिया इज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। देयर इज ऑलवेज बार्गेनिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्पेशली व्हेन द सेंटर और जो स्टेट में अपोजिशन हो, बीजेपी हो और यहाँ पर कोई और हो, कांग्रेस हो या कोई रीजनल पार्टी हो, राइट, या यहां पर कांग्रेस हो, सेंटर में मैं सी लगा देता हूं, यहां एस स्टेट लगा देता हूं। अगर यहां पर कांग्रेस हो, राइट, या यूपीए हो मान लीजिए, और यहां पर दूसरी गवर्नमेंट हो, तो नेगोशिएशन हमेशा जारी रहता है। गॉट द आइडिया? बार्गेनिंग हमेशा जारी रहता है। So that Maurice Jones, which called Indian federalism as a bargaining federalism. Now come to the cooperative federalism. What do you understand by? आपने ये छोटे-छोटे पॉइंट लिख लिए? नहीं sir, I thought you are explaining that you dictate, but or should I dictate? I think. नहीं, it is okay अगर. It is not that कि आप लिखो and add into that. Yes sir. अगर आप इसका आंसर लिखो, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसका आंसर लिखना। ये 4 पॉइंट तो जरूर लिख लो, आपको कैसे लिखना है। मैंने छोटे-छोटे पॉइंट बता दिए। पहला ऑटोनॉमी को लेकर के तो बताया, राजमन्नार कमेटी, अनंतपुर, कल एक्चुअली ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अनंतपुर, पंजाब, साहब रिजोल्यूशन, बंगाल मेमोरेंडम, right, about the autonomy, right, these committees. Then financial matter, the finance commission actually recommend to give grant to granting aid to the states. तो 10th finance commission, ये सब लिख लीजिए छोटे-छोटे पॉइंट। Yes sir, you give question. अच्छा, मैं क्वेश्चन पहले ये आप लिख लीजिए। लिखा आपने? एक सेकंड। हाँ, लिख लीजिए। It never too late, right? लिखिए ऑटोनॉमी। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ स्टेट नेगोशिएट विद द सेंटर, बार्गेन विद द सेंटर। एग्जाम्पल मैंने बताया। दूसरा लिखिए आप फाइनेंशियल मैटर। हाँ, कैसे बार्गेन करता है स्टेट सेंटर के साथ। तीसरा लिखिए रीजनल पार्टी सिस्टम। चौथा लिखिए आप डेवलपमेंट प्लानिंग।
and development. Done. Not so important, but we should be prepared, right? हमारे पास सारे अस्त्र होना चाहिए, right? So done. Yes sir. Okay. So थोड़ा जैसे आप कहीं फुर्सत में हो तो कभी एक दो जो आर्टिकल है बार्गेनिंग फेडरलिज्म आप मारिए गूगल पे, तो किसी न्यूज़पेपर का किसी कोई अगर किसी स्कॉलर ने कोई आर्टिकल लिखा तो उसको पढ़िए, है ना? मैंने जितना बताया उसमें कुछ नया आए तो मुझे बताइए कि सर ये भी हो सकता है ना? ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो हम सब कुछ जानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप लोग से भी बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? हाँ, हम बहुत कुछ डालती हूँ, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर है। क्या जी? मैंने एक आर्टिकल निकाला हुआ है न्यूज़पेपर से, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर है। हाँ नहीं, कोऑपरेटिव तो अभी हम आ रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के, आप चिंता ना करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के आ रहे हैं। आपको कितना मिला है आपको और हम आपको कितना बता रहे हैं उस पर आप पता चल जाएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। चलिए, सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपने सुना होगा नाम, राइट? व्हाट इज दैट? बेसिकली स्टेट सेंटर जो है दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? फिर से बताइए मुझे। अच्छा, बेसिकली जैसे दो पार्टीज हैं, एक नेशनल एक स्टेट लेवल पर है, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना होता है। मतलब एक और जैसे कोऑपरेट कैसे करेंगे, पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। तो जैसे सेंटर ने कुछ बोला वो स्टेट ने माना है, ऐसे करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वरना तो रिलैक्स कर जाएगा, वो एक दूसरे का कोई कुछ मानेगा ही नहीं। यस। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं। एक्चुअली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया है वो अमेरिका में सबसे पहले आया, और कैसे आया वो बताते हैं, तब आपको इंडिया पे थोड़ा आइडिया रहेगा। कहानी सुनिए। क्या हुआ कि इंडिया जो अमेरिका में है, यूएसए मॉडल आपको पता है? अमेरिका में द टू मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, और देयर इज स्टिल देयर इज अ वेरी रिजिड। सो देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट and there is a state government. Fine? Okay. So the state government अपने क्षेत्र में काम करता है और फेडरल गवर्नमेंट अपना एरिया में काम करता है, राइट? yes, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक्चुअली देखा गया कि यार ये जो सेंटर भी अपने तरफ से काम कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, दोनों में कोई मतलब कोई सम्मेलन ही नहीं, कोई मेल मिलाप ही नहीं है। तो स्कॉलर ने कहा कि व्हाट यू आर डूइंग, you are ruling the same people but you are working in a different direction, cooperate each other, right? जैसे मैं बताता हूँ 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था। have you heard of this depression? yes, world listing I have read it. yes, so ग्रेट डिप्रेशन जो आया था 1929 में, आर्थिक संकट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसमें देखा गया कि ये तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एंड सेंटर ने कहा कि यू आर, मतलब स्कॉलर्स ने कहा कि यू पीपल आर both are yes ruling the same people, right? But you all are in different direction. तो उनको कहा कि चलिए आप लोग ऐसा कीजिए कि वेलफेयर प्रोग्राम लीजिए, दोनों लोग मिल करके दोनों लोग कोऑपरेट कीजिए। देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट,
So it's not be the the independent. There should be interdependent. क्या होना चाहिए? Interdependent. हाँ. बट जो अमेरिकन मॉडल है वो क्या है? इंडिपेंडेंट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म. दोनों अलग अलग का, दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. तो ये एक आइडिया था. एंड अगर तो ये तो एक बैकग्राउंड बताया मैंने आपको कि यूएस मॉडल में ऐसा हो रहा था. जब इंडिया में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास जो आइडिया ये था कि हमारा जो स्टेट होगा उसका जो पहला काम होगा वो क्या होगा? डेवलपमेंट का. क्या काम होगा? डेवलपमेंट. Yes. You must have heard of the tri-state destiny speech of Jawaharlal Nehru. So हमारा काम होगा डेवलपमेंट का. आपने डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं. मैं पहले इसलिए पढ़ा चुका हूँ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. So it is impossible for center, right, or even for a state to sponsor development alone, right? So actually they sought cooperation, right? So center भी करेगा काम, state दोनों मिल करके काम करेगी. किसके लिए? एक डेवलपमेंट के लिए, right? For empowering people, for implementing welfare schemes. So there should be interdependent between the center and the state, right? So if you see that their center is working on this list 1, right, and the state is working on the list 2, but there are list 3, right? So if list 3 where the both have power, जहां पर दोनों के पास पावर है कि वो अपना क्या बनाए, अपना एक कानून बनाए, अपना लॉ बनाए, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए. आपको पता है कि लिस्ट 3 में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट इसमें है स्टेट लिस्ट में, लिस्ट 3 में, कंकरेंट लिस्ट में. लिस्ट 1 में क्या क्या है? डिफेंस, करेंसी, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट, रेलवेज वगैरह वगैरह, राइट. लिस्ट 2 में क्या है? एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन पहले था, एजुकेशन, राइट, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, रूल ऑफ ये लॉ एंड ऑर्डर. ये सारे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन थे वो लोकल गवर्नमेंट को दिए गए थे कि आप इस पे काम कीजिए, हम इस पे काम करेंगे, और दोनों मिलकर क्या काम करते हैं. और लिस्ट 3 एक ऐसा था कि दोनों लोग मिलके इस पे लॉ बनाते हैं. तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मैटर है, जो वो स्टेट लिस्ट 3 में थी. फिर आपको बताता हूं इंश्योरेंस, क्या बोलते हैं हम, एक मिनट, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ये पेंशन, राइट. ये सारे जो वेलफेयर के थे ये स्टेट लिस्ट में थे, स्टेट 3rd कंकरेंट में, जहां पर कि सेंटर और स्टेट के दोनों के पास एक पावर है और दोनों कोऑपरेट करके, ये दोनों कोऑपरेट करेंगे. एंड दिस 2 layers of the government are interdependent, right? These 2 layers of government are interdependent in order to foster social and economic development, to empower people, right, and to implement all the welfare schemes that India had envisioned or framed, right? So basically this term was given by Granville Austin in his book
India's constitution, cornerstone of our nation. You must be knowing this book. आपको पता है इस किताब के बारे में? ग्रैनविल ऑस्टिन बताता हूँ, अब यही लिख देता हूँ मैं। इसका किताब का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, नो द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, हाँ कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। ये किताब नहीं है आपके पास? नहीं, मंगाइए, जरूर मंगाइए इस किताब को, राइट। एंड फेडरलिज्म के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के ऊपर पढ़ना चाहिए आपको। ये किताब तो जरूर पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है 2-3 दिन में आप खत्म कर देंगे, इतना इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत मजेदार किताब है। प्राइस भी ज्यादा। हाँ बोलिए। पीएम बख्शी का बेयर एक्ट बताया था ना, वो बेयर एक्ट, हाँ वो बताया था क्लच के लिए। आपके पास जो है एक है ना क्लच आपके हाथ में हो, ये जो किताब है ना, ये सब आपको आइडिया देगा, और आइडिया एग्जाम के लिए तो जरूर देगा, होल माइंड को सेव कर देगा आपके दिमाग में। बेयर एक्ट तो ठीक है। बोलिए। इसलिए नहीं कह रही, मैं आस्किंग कि वो मतलब वो शॉप तो खुली नहीं है, और मेरे एरिया के लिए तो नॉट अवेलेबल। कोई बात नहीं। तो आप अभी बाद में एक्चुअली ये होना चाहिए, आप खुद पढ़िए, आप अपने घर में किसी को देखिए कि अच्छा ये किताब पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो। दिस इज कॉमन बुक, इट्स वेरी गुड, इट्स अ नाइस बुक। पीएम बख्शी का तो मैंने एग्जाम के पर्पज से बोला था, यू नो, फॉर आई एम सेइंग इफ यू कैन हेल्प मी, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है। क्या चीज? सॉरी, हेलो सर, एक्चुअली यस सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए। मेरे एरिया में actually problem is कि online that book is available in some areas, not all areas. Fine. So I am, can you help me, can you check is it available in your area so that you can send me, you can post me, I will pay. No, that's fine, where do you stay? Rohini is a smart city, you know. Isn't it? I stay in Ghaziabad, right? So which book? PM Bakshi, na? Yes, sir. आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है ये, आप पॉकेट एडिशन लेना। हाँ, I am thinking to take e-book if it is available. Don't take. Do you like ebook? I don't personally. I don't like ebook. Sir, personally, I do not like. I pay book and pen. Then Yes. Hello. It's available, I think, you know. But अभी तो सारा कुछ बंद है ना? All shops are closed. All हाँ. लेकिन Great. Hello. Are you getting my point?
Acha, am I audible to you? Huh. Yes. So the did you get the idea of cooperative federalism, Yes. or should I dictate? अगर आप dictate that would be nice. Ach, Otherwise, ach, ach. No, I will dictate. Because it's very important. It's very important, right? This is conceptual and it's very important. Very, very important. yes, sir. लिखिए cooperative federalism. लिखिए unlike US model of unlike the US model of federalism, where the state and the federal government are independent to each other, Yes, sir. comma, unlike the US model of federalism where the state and the federal government are independent to each other, the Indian model of federalism, is based on interdependent interdependence of the center and the states. Both cooperate and coordinate each other in order to foster better development and to implement welfare program. इतना लिखा? Yes, sir. Okay, लिखिए फिर. Although list 1 and list 2 gives power, and list 2 give power to the center and to the state respectively, but list 3 provides
common space, a common list, common subject, like मैंने क्या कौन सा डेवलपमेंट लिखा था अभी भूल गया मैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, social and economic development, comma, social security and pensions on which the center and state both can work together, right? The administration, the central administrator like IAS can cooperate the state level administrator like BDO, right, for better implementation of development plan, and to empower people, right? Yes, sir. कितना लिखे? Yes, sir. अब लिखिए सेकंड पैरा लिख लिया? Yes, sir. ओके, लिखिए स्कॉलर लाइक, रुक जाइए, स्कॉलर ये बिर्च कौन है? एएच बिर्च, हाँ एएच बिर्च। देखिए स्कॉलर लाइक एएच बिर्च and Granville Austin categorized Indian federalism राइट। सो एक ही बीच पे ऐसे लगा दीजिएगा, ग्रैन्युल ऑस्टिन पे ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा। ग्रैन्युल ऑस्टिन कैटेगराइज इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, a cooperative federalism. Later, Sarkaria Commission also recognized the importance of cooperative federalism in India. लिख लिया? Yes, sir. स्कॉलर के बदले यहाँ लिख सकते हैं constitutional expert या expert of the constitution, या simple ऐसे लिखिए scholars like A.K. Beach and Granville Austin categorize Indian federalism as a cooperative federalism. Later, Sarkaria Commission also recognized the importance of cooperative federalism in India, right? The Niti Aayog
emphasized the role, the Niti Aayog emphasized the role of the state in development, and they focused on cooperative federalism, they focused on cooperative federalism on competitive basis. It means each state should take its own model of development. And the center shall cooperate with it. The center shall cooperate with them. The Niti Aayog. Sir, kya with them? Okay. Yes, with them. The Niti Aayog focused on bottom-up approach, of development for better coordination and cooperation between the center and states for transforming India. Done, sir. Done? Very good. Yes. समझ में आया? Yes. So अंडरस्टैंडिंग रीच हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर? Yes. Okay. So जो स्कॉलर थे A.M. Birch, ग्रैनविल ऑस्टिन, इन लोगों ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस, मतलब उनको बोला कि फेडरलिज्म कोऑपरेटिव मॉडल पे होना चाहिए, यानी कि जो सेंटर है और स्टेट है दोनों इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों को फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर, राइट? कहां पर रहे थे? राइट. So that is cooperative federalism. So cooperative federalism means, cooperation between the center and the state, right? At the each layer of the government, because each layer of government is, administrating the same people, governing the same people, isn't it? Yes. So यहाँ पर ये जो मैंने, अब हम देखते हैं कि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पता चल गया, आइडिया क्या है? Yes, sir. ओके. सो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, ये मुझे गूगल से मिल गया तो मैंने उठा करके ऐसे डाल दिया आपको, शो दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ठीक है, मुझे शायद हेल्प मिले आपको समझाने में और आपको हेल्प मिले इसको समझने में. देखिए फेडरलिज्म क्या है कि बहुत जितना भी लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, मान लीजिए अभी तो थ्री लेयर ऑफ गवर्नमेंट तक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ये तीनों लेयर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Interdependent होना चाहिए. Yes. So they should exercise with the cooperation and coordination in order to foster better development.
राइट। ये अपने आप में सहयोग करना चाहिए इन तीनों के बीच में, ताकि वो लोग अच्छे से विकास, आप हल्ला आप सुनते हैं, विकास कहाँ है, विकास होगा सबका साथ सबका विकास, इतना इतना हंगामा सुनते हैं आप? यस सर। हाँ, सब पूछते हैं अच्छा विकास कहाँ गया जी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ। हाँ, लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। सर हमारे यहाँ पे ना ऑफिस में आई शेयर वन थिंग, उनका नाम, सर का नाम भी था विकास। अच्छा। हाँ। तो क्या होता था फिर? कुछ नहीं, वो सरकाजम समझ जाते थे। अच्छा। विकास गायब विकास कहाँ है, गया, विकास कहाँ गायब है। राइट विकास राइट राइट। राइट, लोगों ने बहुत मजाक पढ़ाया। एक्चुअली हमने विकास विकास एक्चुअली इन्होंने किया भी बहुत। हाँ, कि ऐसे विकास करेंगे, वैसे विकास करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। हाँ, और वो ये तो सर आई हैव सीन समवेयर, वो मूवीज में भी आई थिंक दे स्टार्टेड यूजिंग अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है। अच्छा। Right. So you can see the all layers of government should be interdependent. तो यहाँ पर एक फिगर दिया है कि अच्छा एक मान लीजिए एक लेयर ये है, सेकेंड लेयर ये है, मान लीजिए थर्ड लेयर भी हो सकता है ये है। तो 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट, तीनों लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी फॉर द बेटर डेवलपमेंट। फाइन। यस सर। ओके, नाउ कम टू द अगेन, उसी को समझाने के लिए कि देखिए जो हमारा जो अमेरिकन मॉडल है वो एक लेयर्ड केक मॉडल है, डुअल। राइट, यहाँ पर देखिए जो केक है सब लेयर्ड है, देख पा रहे हैं आप केक? और जबकि आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो केक देखें तो देखिए पूरा व्हाइट कहीं पे दिख रहा है, हाँ, क्रीम मतलब क्रीम कहीं पे जा रहा है। हाँ, सो इट्स ए कॉल्ड अ मार्बल केक फेडरलिज्म। राइट, सो मैंने सोचा कि है अगर ऐसा तो मैं आपको बता, कंफ्यूजन ना हो। इसका अपने की कोई जरूरत, लिखिएगा मत, अभी एकेडमिक डिबेट नहीं आया। एकेडमिक डिबेट में नहीं है, बस आप एकेडमिक डिबेट में नहीं आया है तो इसको लिखना नहीं है। जब आप लिखें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो मार्बल केक फेडरलिज्म, हाँ, मैं बस ऐसे समझाने के लिए बताया कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कि मान लीजिए एक केक है, तो मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं हर जगह हर लेयर पे काम कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर देखिए डुअल, एक व्हाइट एक जगह है, व्हाइट एक जगह है, व्हाइट एक जगह है, ये एक जगह है, यहाँ पे लेयर्ड है। जबकि मैंने अमेरिकन को बताया आपको कि ये लेयर्ड है। यहाँ पे यूएसए मॉडल ऑफ रिजन, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। राइट, जो केक है हमारा वहां पर कहाँ का, यूएसए का, वो पूरा लेयर्ड है। राइट, बट जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इट्स काइंड ऑफ मार्बल केक, कि पूरा मिक्स है। राइट, फाइन। यस सर। Okay, now tell me what is asymmetrical federalism? Have you heard of this word? Yes. Asymmetrical federalism, I exactly do not know, but I guess कि जो पावर्स हैं जो जैसे डिवाइडेड होती हैं वो थोड़ी सी एसिमेट्रिक, मतलब सेंटर के पास ज्यादा है, स्टेट के पास कम है, उस हिसाब। सो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को जो कॉइंड जिन्होंने किया, जिन्होंने आइडिया दिया, उनके नाम है लुईस। ये जो ऑथर है ना, आप देख पा रही है किताब को? यस सर, पर पढ़ नहीं पा रही। अच्छा, लुईस नाम है इसका। नाउ कैन यू रीड इट? यस सर, इंडियन फेडरलिज्म। Yes, so Louis Stillin wrote a book called Indian, इसमें इन्होंने अभी लिखा है किताब। इन्होंने जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की आइडिया था बहुत पहले लिखा।
और एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का आइडिया जो है अगेन यूएस मॉडल के अगेंस्ट में है। यूएस मॉडल में क्या है? डुअल फेडरलिज्म। यूएस मॉडल में है कि सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। यूएस मॉडल भी सिमेट्रिकल है। मान लीजिए कि ये स्टेट है, ये फेडरल गवर्नमेंट है, सारा सेंटर सिमेट्रिक है। आप देख रहे हैं सिमेट्री? फीचर बना रहा हूं बस ऐसे कि मान लीजिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, उतना ही। हाँ, उधर उस साइड भी स्टेट गवर्नमेंट है, उस साइड भी गवर्नमेंट है, उस साइड, इस साइड भी है ऊपर। चलिए 3 डायमेंशनल बन नहीं पाता है ना 2 डायमेंशनल पे फिगर, राइट। सो हर जगह एक्चुअली आपने हीरा का आपने एक्चुअली यस जो जो आपने हीरा को देखा है कभी? हीरा बड़ा डायमंड देखा है? हीरा का जो फिगर होता है वो सिमेट्रिकल होता है। या इवन आप नीचे नाम मैं बता देता हूँ, कोई भी गन, ऑक्टागन, हेक्सागन, ये हेक्सागन है। अब इसी को हम ऑक्टागन बना लेते हैं। ऑक्टागन से भी ज्यादा हो गया। एनीवे सिमेट्रिक है, यानी कि आप देखेंगे अमेरिकन फेडरलिज्म में जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है 2 सीनेट में। वहां पर पता है ना आपको पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाउस को सीनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन नहीं बोलते, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते। ओ अच्छा, कॉमन वहाँ बोलते हैं आई थिंक इंग्लैंड में, यूके में, या राइट। तो वहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं और जो अपर हाउस है उसको सेनेट बोलते हैं एंड जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और सीनेट में जैसे इंडिया के राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैसे ही सीनेट में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो 2 होता है। ईच स्टेट हैज 2 रिप्रेजेंटेटिव इन द सीनेट। फाइन। तो मान लीजिए 50 स्टेट है अमेरिका में, तो सीनेट के मेंबर हैं 100, राइट। That is right. So each state had their own constitution. Each state had their own citizen, the dual citizenship. हाँ, सुप्रीम कोर्ट, तो हर स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। जो पावर डिवीजन है बड़ा ही सिमेट्रिकल है यूनिट के बीच में, among the units, right? बट एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर डिवीजन होता है यूनिट के बीच में वो बड़ा ही एसिमेट्रिक होता है। Got the idea? Yes sir. Okay. So अगर आप बात करेंगे कि इंडिया एसिमेट्रिज्म, तो आप हम 3 लेयर पे एसिमेट्रिज्म बात कर सकते हैं। पहले मैं यहां बताता हूं, फिर वो फिगर पे जाऊंगा। So इंडिया में है कि एरिया हैव some have no autonomy, side of autonomy, like Article 371। आप देखेंगे इसमें क्या है, A, B, C, D, E, F, G, H, I तक है ना? तक है ना? तो हर अलग ऑटोनॉमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, राइट। इनको अलग, अरुणाचल को अलग है। फिर आप देखेंगे, हाँ, फिर देखेंगे कि जो राज्यसभा है हमारा, राज्यसभा
इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यूपी से 31 है, ठीक है, और त्रिपुरा से 1 है। हाँ, झारखंड से 16 है। फाइन। yes, ओके, नाउ अगेन यू कम टू द ये अभी मैं सोच रहा था कि ये बताऊंगा और भूल गया मैं क्या बताऊंगा। एनीवे, तो राज्यसभा में ये है 31 मेंबर, त्रिपुरा में। इवन लोकसभा में देखिए, लोकसभा में यूपी से कितना जाता है, 480, राइट। अगर आप स्मॉल स्टेट झारखंड को लेंगे तो शायद 40 जाता है, 40 के आसपास। बिहार से ही जाता है 39 मार्क। और सॉरी, 1 मिनट, इसमें 80 जाता है, ओनली 80, 480 कहाँ, 80, राइट। झारखंड से मैं लोकसभा में यूपी से 80 मेंबर जाते हैं। अब केरला से देखिएगा, केरला से कम मेंबर होंगे, राइट। हाँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, तो हर स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात यूटी जो है हमारे पास 8 यूटीज है। उसमें भी जो दिल्ली है एंड पुडुचेरी है, उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन अदर के पास नहीं है, राइट। सो देयर आर, एंड अगर आप फाइनेंस कमीशन देखेंगे, फाइनेंस कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी सिमेट्रिकली नहीं कर रहा है, वो भी अलग अलग तरीके से कर रहा है, राइट। अगर आप नीति आयोग को देखेंगे, नीति आयोग भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, शेयर या डेवलपमेंट प्लान बना रहा है, अभी भी बता रहा हूं मैं, अभी बताया मैंने कि उसमें हर स्टेट को उसके हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाने के बाद बात कही है, राइट। इट्स नॉट सिमेट्रिकल, इट इज एसिमेट्रिकल। The idea of symmetrical federalism? Yes, sir. Okay. Now come see the 3 level of the asymmetrical federalism. The physical or economic asymmetry. So if you see the article 371, see the governor of Maharashtra, Gujarat has equal responsibility to cover equitable allocation of fund or development expenditure and providing facility for technical education and vocational training to Vidarbha, Marathwada, in Maharashtra and Kutch in India. तो आर्टिकल 370 अभी मैं बता रहा था, आर्टिकल 371 का ए, बी, सी, डी बहुत सारे हैं। फिर फाइनेंस कमीशन है, जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन 3 का ग्रांट देता है, राइट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट, स्पेशल ग्रांट एंड अदर ग्रांट। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, फाइनेंस कमीशन। Yes, sir. So finance commission gives allocate 3 kind of grant. What is that? A special grant, Foreign aid नहीं, देखिए जो CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उनसे ग्रांट देता है, उसमें से तो स्पेशल ग्रांट देता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट देता है, डिस्क्रिशनरी एंड अदर ग्रांट, राइट। yes, तो ये है फिजिकल एसिमेट्री कि हर स्टेट को अलग अलग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता है, हर स्टेट को अलग अलग फिजिकल इकोनॉमिक एसिमेट्री है, राइट। एंड इफ यू सी द पॉलिटिकल एसिमेट्री में आपको बताया कि राज्यसभा में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। मान लीजिए किसके राज्यसभा में यूपी के कितना है, राज्यसभा में कितना यूपी का 31, त्रिपुरा का है 1, राइट।
अब बहुत से कुछ यूनियन टेरिटरी है जिसका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। So what do you think, this is good or bad? मतलब No, जी, Indian federalism is, it's not representation है, this is really, होना चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इंडियन फेडरलिज्म क्या हाँ बोलिए। किसी का अगर एक भी नहीं है तो that's not a good thing, but बट आई थिंक जैसे एक बार हम सर वो पिक्चर नहीं देख रहे थे, वो इक्विटी में मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के स्टेडियम से कोई लोग अंदर देख रहे हैं और किसी की हाइट बहुत लंबी है और हम किसी की छोटी है, तो हम उसको स्टूल दे दें और लेकिन उसको भी दे दे जिसकी ऑलरेडी बहुत लंबी है, और जिसकी बहुत ही ज्यादा छोटी है तो एक से भी उसका काम नहीं चल रहा। तो ये तो इक्वालिटी हो गई। छोटी कैसे होगी, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको दे दो। तो ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ज्यादा है, जैसे यूपी बहुत बड़ा है, यूपी से बहुत पॉपुलेशन है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन अगर ज्यादा था, आई थिंक दैट्स गुड। अगर तेलंगाना तो छोटा सा स्टेट है उसके सामने, तो अगर इस हिसाब से दी जा रही है रिप्रेजेंटेशन, तो बाय बेसिकली कॉन्सेप्ट कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इफ रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, तो आई थिंक दैट्स गुड। तो एसिमेट्री आ रही है। बट हाँ, जो यूटी है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दे मस्ट बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, राइट। वो अपनी बातें तो कह सके पार्लियामेंट में, राइट। तो अगर कुछ यूटी है जिसकी असेंबली है एंड पुडुचेरी, राइट। Then the third is asymmetry, administrative asymmetry. So like 6th schedule, right, 5th schedule, right. There are hill areas, like Garo Hills, autonomous, yes, Garo, Kasi, Jainta, and they can do, they can administer on the basis of their requirement, right? Yes, sir. So that is the asymmetric federalism. You can make a note of it. Yes, I will make. Should I give you question on asymmetric federalism? Yes, sir. Question दे दूं? Yes, sir. Okay. यहाँ पर कुछ नहीं। What is asymmetric federalism? Discuss it in the Indian context. लिख लिया? What is asymmetric federalism? Discuss it in the Indian context. Fine. Yes, sir. So मैं ये भेज दूंगा, क्या नाम है, ये जो आपका पीपीटी है भेज दूंगा। एक चीज बता देता हूँ, आप मेंशन जरूर कीजिएगा, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द लुईस टिलिन। The concept of asymmetric federalism was given by, किसने दिया था? Given by लुईस टिलिन। लुईस टिलिन, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। तभी हमने ऊपर लिखा था। ये देखिए, लुईस टिलिन, इसने दिया था। ओके। और राइट, सो कल थोड़ा हम लंबा क्लास करेंगे,
10-15 मिनट ज्यादा चलेगा? ओके सर। अच्छा, so see you tomorrow then. ओके सर, बाय सर, थैंक यू। Bye bye, welcome.